Hello, Matujima, and watching Hornbill TV's Prime Time. The government is trying to build consensus on referring the contentious Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a joint parliamentary committee (JPC) for review amid continuing deadlock, with the opposition people aware of the matter said on Tuesday. A ruling Bharatiya Janata Party lawmaker said the government has heard concerns of political parties, church representatives and non-government organizations about the provisions of the bill introduced in the Lok Sabha in March. Union Home Minister Amit Shah assured Mizoram Chief Minister Lal Tuhoma that the FCRA laws will not be implemented retrospectively. The lawmaker said Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju is leading the outreach to the opposition to agree to send the bill to the JPC. There are several parties that have demanded scrapping the bill entirely, while some have concerns about specific provisions. The government has refuted the perception that the bill will adversely impact minorities or social organizations. A second PJP leader said the monsoon session of Parliament will conclude on Friday and the chances of taking up the bill for discussion are bleak. But if there is consensus, the government can make a statement on sending it to a JPC, said the second leader. A Biju Janata Dal lawmaker said the party is not adverse to sending the bill to a JPC. On Thursday, DMK lawmaker P. Wilson led a delegation of church representatives who met Shah with a memorandum specifying their concerns about the bill. The memorandum said the measure, which alters the incidence of ownership of charitable, educational, medical and religious property throughout the country, ought not be carried through without the fullest pre-legislative scrutiny. It requested the bill to be referred to a JPC. China on August 10 rejected India's move to identify 27 places and geographical features in Arunachal Pradesh by their standard names on the official Indian map, calling the move illegal, null and void. Chinese Foreign Ministry spokesperson Go Jharkhand said Beijing did not recognize what it termed Arunachal Pradesh, asserting China's claim over the region. He said, still less will it change the fact that Jiangnan region belongs to China. China refers to Tibet as Xinjiang and Arunachal Pradesh as Jiangnan. The remarks came after India last week formally identified 27 places and geographical features in Arunachal Pradesh by their standard names on the official Indian map. Responding to China's statement, the Ministry of External Affairs MEA reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, referring to the row with China over renaming places in the border state. The government highlighted that the step is intended to guarantee precise geographical recognition of these sites whilst enhancing public awareness regarding their historical and spatial importance. The official list further incorporates Jirampur, a key logistical center in eastern Arunachal Pradesh, alongside Jaswantgarh in the Sri E. Thapa Memorial, both erected to honor the valorous Indian soldier of the 1962 war. China's Ministry of Civil Affairs has periodically announced Chinese names for locations in Arunachal Pradesh since 2017 as part of Beijing's efforts to reinforce its territorial claims over the northeastern state. The latest list was released in April this year. India has consistently rejected China's attempts to rename places in Arunachal Pradesh, describing such moves as baseless and asserting that changing names cannot alter the ground reality or the state's status as an integral part of India. New Delhi has maintained that Arunachal Pradesh was, is and will remain an integral part of India. The Rajya Sabha on Tuesday passed the Tribunals Reforms Bill 2026 aimed at bringing reforms in the functioning, administration and appointment process of tribunals across the country. The bill seeks to improve the functioning of tribunals and ensure transparency and uniformity in the appointment and service conditions of tribunal members. It also proposes setting up a National Tribunals Commission. Replying to the discussions in the upper house, Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal said that while infrastructure such as roads, railways, airports and seaports is essential for development, legal infrastructure is equally important for the country's progress. The minister highlighted that the absence of a mechanism for speedy disposal of disputes remain a challenge and stressed that an efficient tribunal system is an important foundation for India's economic growth.
Shriman Arjun Ram Meghwal ji to move that the bill be passed. Deputy Chairman, sir, with your permission, I move that the Tribunal Reform Bill 2026 be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Cockroach Janata Party CJP founder Abhishek Dipke on Monday announced a nationwide campaign to improve government schools in villages, calling on parents to conduct social audits of basic facilities and sarpanches to take up the task of improving the institutions. The campaign will be launched on August 15 with the CJP calling upon citizens, parents and village leaders to work together to address what it termed neglect of rural educational infrastructure. In a video message, Dipke said he would launch the initiative from his village, Hingoli in Maharashtra, by approaching the village head with the request of improving the government schools there. Dipke said that village children still have to walk long distances to attend school and often find basic facilities such as drinking water and toilets unavailable. As part of the campaign, the CJP has issued an appeal to sarpanches across the country to improve government schools in their respective villages. हेलो एवरीवन, इस 15 अगस्त को हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन 80 इयर्स में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ निगलेक्ट हुई है, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इग्नोर की गई है, तो वो है हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं। वो 80 साल में हम लोगों ने गांव में जो स्कूल होते हैं उन पर ज़रा भी काम नहीं किया है। हमने नई पार्लियामेंट बना दी, नया पीएम हाउस बना दिया, तो हम नए स्कूल्स क्यों नहीं बना पाए हमारे गांव में? क्या हमारे गांव में जो किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में, क्या उन्हें हम अपने देश का भविष्य नहीं मानते? आज तक हमने उन बच्चों के लिए क्या किया और क्यों उनको हम आज तक वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सके जो किसी बच्चे को एक बड़े सिटी में मिलती है? आज भी गांव के बच्चों को पैदल चलकर पता नहीं कितने दूर जाना पड़ता है स्कूल अटेंड करने के लिए, और वहां जाने के बाद ना पानी की फैसिलिटीज होती है, ना टॉयलेट की फैसिलिटीज होती है। इससे खास करके जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि इस 15 अगस्त को अगर हमको किसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, एक नई शुरुआत अगर करनी चाहिए, तो वो शुरुआत हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक करके करनी चाहिए। और इसके लिए मैं खुद अपने गांव हिंगोली जाकर वहां के सरपंच से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप गांव का स्कूल ठीक करिए। और उसके साथ साथ जितने भी सरपंच ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं कि एक चांस है हम लोगों के पास अब कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। तो क्यों ना हम जितने भी गांव में सरकारी स्कूल है उन स्कूलों को ठीक करें, उन स्कूलों को बेहतर बनाएं, ताकि जो किसान और मजदूर के बच्चे गांव के स्कूलों में पढ़ सकते हैं उनको भी लगे कि वो भी इस देश का भविष्य है। तो अगर गांव के सरपंच अपने गांव का स्कूल ठीक करते हैं तो हम उसके बाद उन स्कूलों के फोटो लेकर उस सरपंच का नाम भी बताएंगे और गांव का नाम भी बताएंगे। हमारे सोशल मीडिया पर हम पोस्ट करेंगे सीजीपी पर, और हम आप लोगों को क्रेडिट देंगे, ताकि आप लोगों को देखकर, आपने जो स्कूल ठीक करे उसको देखकर कई और दूसरे सरपंच भी अपने गांव के स्कूल ठीक करना शुरू करें। और इसके साथ साथ हम एक और चीज करना चाहते हैं, वो है सोशल ऑडिट। तो जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी एक सोशल ऑडिट करना शुरू कर दीजिए। आप अपने बच्चों के स्कूलों में जाइए, देखिए क्या वहां पर बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं, देखिए वहां पर
बिजली आती है यानी पानी आता है यानी, क्या आपके बच्चों को वॉशरूम की फैसिलिटीज मिलती है यानी, मिड डे मील्स मिलते हैं यानी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसकी वीडियोस बनाइए, क्योंकि आपके बच्चों की जो स्कूलिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। वो आपका फंडामेंटल राइट है, आपके बच्चों का फंडामेंटल राइट है। इसके लिए हम एक फॉर्म भी इशू करेंगे जो हम आप लोगों को जल्दी शेयर कर देंगे, जिसको आप प्रिंट करके फिल कर सकते हैं और बता सकते हैं आपके बच्चों के स्कूल में कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है और कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आप वो फॉर्म हमें contact@cockroachjantaparty.org पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में आपको कमेंट सेक्शन में भेज दूंगा और फॉर्म का लिंक भी हम जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए एक साथ मिलकर हम एक प्रॉमिस करते हैं सभी बच्चों से जो गाँव में रहते हैं कि हम उनके स्कूल ठीक करेंगे। एक साथ मिलकर हम ये कर सकते हैं। अगर हम सारे लोग कलेक्टिवली साथ में आकर काम करें, एक्ट करें, सो आई एम वेरी श्योर कि हम हमारे गांव के स्कूल बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बिकॉज द रियल इंडिया लिव्स इन विलेज। We'll take a short break. Keep watching. मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। शहीदों के अमर बलिदान और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का जन उत्सव हर घर तिरंगा एक बार फिर पूरे देश को राष्ट्र भक्ति के भाव से जोड़ने आ रहा है। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने वाले इस अभियान में उत्तर प्रदेश पूरे उत्साह के साथ सहभागी बन रहा है। 9 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान तथा शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए। अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करिए। सर्वप्रथम देश है। मेरे वतन के Welcome back.
The All Kerala Lower Primary School Teacher LPST Rank Holders Association ended their 13-day hunger strike outside the state secretariat following discussions with Education Minister N. Samsudin on Tuesday, with the government seeking 45 days to examine the protesters' demands. Although the hunger strike has been ended, the association stated that a peaceful presence outside the secretariat will continue without slogan shouting or demonstrations. The LPSC rank holders have been protesting for over a month, demanding appointments from the Kerala Public Service Commission's rank list for lower primary school teachers post published in May 2025. All Kerala LPST Rank Holders Association Secretary S. Valare Mati, who was hospitalized today after 13-day hunger strike, expressed optimism that their grievances would be resolved by September 24. Over the month-long protest, candidates drew widespread attention through symbolic demonstrations such as eating grass outside the secretariat. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിരാഹാര Moving on to the next news, Cockroach Janta Party CJP founder Abhishek on Tuesday condemned the police action against student protesters in Jharkhand, comparing the incident to the recent crackdown at Delhi's Jantar Mantar and questioning why brutality is reserved specifically for the youth. Speaking to reporters about the violence during the JSS JPSC aspirants March in Ranchi, Dipke alleged that the use of tear gas and batons against students highlights a disturbing trend in how governments handle non-political agitations. He expressed deep concern over the condition of student leaders Devendra Mahato, who was allegedly assaulted by the police despite being in a weakened state. झारखंड में जो भी हुआ वो बहुत ही खराब था। जैसा जंतर मंतर पर हमने 20 तारीख को देखा था, कुछ वैसा ही नजारा झारखंड में कल देखा गया, जहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर टीयर गैस बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करती है तब लाठीचार्ज या टीयर गैस क्यों नहीं यूज किया जाता है। ये टीयर गैस और लाठीचार्ज हमेशा जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। देवेंद्र महतो जी से भी कल मेरी बात हुई, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन से अनशन पर थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन पर लाठियां चलाई है और उन्हें मारा गया है, पीटा गया है और वो हॉस्पिटल में है और उनकी अभी जो सिचुएशन है वो भी काफी चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सारी सरकारों को, चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड हो, देश में जितनी भी सरकारें उन सभी को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स पर ऐसा अत्याचार करके आप लोगों को क्या मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी वोट बैंक के लिए नहीं लड़ रहे। तो इनके ऊपर इस तरह का लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की ब्रूटैलिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो भी आया है जिसमें आप समर्थन देते हुए दिख रहे हैं, आपकी क्या बातचीत हुई? देवेंद्र महतो जी से मेरी वही बातचीत हुई। मैंने पहले तो समझने को कोशिश की उनकी अभी सेहत कैसी है, क्योंकि जो मुझे पता चला था, मेरी टीम वहां पर लगातार बनी हुई, कल रात भी हमारी टीम वहां पर पूरी रात उनके साथ हॉस्पिटल में थी और सुबह भी मेरी बात हुई कि अभी उनकी सेहत कैसी है। तो हमने तो वही पूछा कि आप लोगों को जो भी मदद चाहिए वो हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ है, जितनी भी डिमांड्स है हम उन पूरी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। और हम देवेंद्र महतो को खुद झारखंड के जो इस आंदोलन के नेता है, हम चाहते कि ये पूरा आंदोलन वही संभाले, वही चलाए और उनके चेहरे पर ही चले, क्योंकि वो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है 9 दिनों का अनशन करके। तो उनके लिए जो भी करना पड़े हम पूरी तरह करेंगे, उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। समाज की काफी
We'll take a short break. Keep watching. Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow and today. Bridge between aspirations and accomplishment. Bridge between I wish to I can. I will remove the gap. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. I can fly above imagination. ICFI. Welcome back. Former Syrian President Bashar al-Assad was sentenced to death in absentia by a criminal court in Damascus on Tuesday after being convicted of premeditated murder, while Atif Najib, former head of political security in southern Syria's Zera province, was also sentenced to death after being found guilty of premeditated murder and torture. According to the Times of Israel, the Damascus court's ruling marks the first death sentence against Assad by Syria's transitional authorities, which began proceedings this year against figures associated with his former government, both in person and in absentia. According to court convictions, Assad was convicted over charges linked to 13-year civil war, with the case also described as involving war crimes and crimes against humanity. Assad fled Syria with his family in December 2024 as opposition forces led by Hayat Tahrir al-Sham HTS advanced towards Damascus. He was subsequently granted asylum in Russia. Indian Premier League cricket player Abhishek Porel was arrested on Friday in West Bengal following a criminal case registered on the complaint of a woman alleging fraud under false marriage promises. Detailing the sequence of events during a media briefing, Hooghly Rural Superintendent of Police SP Kunwa Bhushan Singh stated that the premier domestic cricketer was taken into custody from Dum Dum in connection with a formal police complaint filed by a woman alleging relationship fraud under false marriage promises. Meanwhile, the IPL player strongly refuted the criminal complaints brought against him and dismissed all accusations, terming them false, while law enforcement personnel proceeded to produce him before the local judiciary. The development comes weeks after the Calcutta High Court directed Bengal Police to arrest Porel in connection with the case. The court of the Chief Judicial Magistrate of Churachura in Hooghly district remanded Porel of 3 days of police custody. The accused cricketer was brought under arrest from Dum Dum in Kolkata by Mogra Police of Hooghly district. He was produced in the court of CJM of Churachura in Hooghly. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV. Want to build a career in hotel management?